Good evening and welcome. Welcome to the Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashi Dhar, your host, and today we are here to do the second step of Ashtanga Yog as described by Sage Patanjali. So we are going to do the second step of Niyam and its 5 steps. But before that, we are going to do a quick recap of what we did in the session 1, which is an overview of the 8 steps of Ashtanga Yog and the first step in details which we did, Yama. So Yama, 5 steps, we are going to recap, overview, and then also before we start, we are going to do some basic principles of yoga. What is Sage Patanjali trying to say in this Ashtanga Yoga? We will talk on that. And then we move on to the Niyam. Yes? So anybody who wants to ask any question or anything you want to share, please go ahead. And meanwhile, let me welcome Oppo CPH2505. Okay. And okay. So whenever you feel comfortable, you can share or ask any questions. Okay. Sir, I think I missed on 5 parts of Yama. If you can repeat, I recall. Yeah, we are doing a recap. We are doing a recap very fast. So hold on. Okay. Okay. So before we do the recap, or rather, let me first do the recap since Krishna has raised the question. So we saw the 8 steps of Ashtanga Yoga. So who is going to repeat the 8 steps? Number 1, you can refer to your notes. It's an open book. Open book. Yeah. Yes. Go ahead, Jyoti ji. Okay. Right. Yam means rules for peaceful coexistence in society, and Niyam is self-discipline. Then Asana means yoga, vyam, and pranayam is prano ka control. Pratighar is turning Pratyahar. Pratyahar means turning your mind inward. Okay, very good. Dharana means red nishya. Then, okay, last 2. Anybody else who would like to share? Dhyan means concentration, meditation, and samadhi is dhyan mein lean, oneness with divine. Oneness with divine. Very good. Let's acknowledge Jyoti ji. Very good. So these are the 8 steps. So if you want to highlight the steps, first you should name the step and then give the explanation, right? So who is going to repeat that? Just the names. No explanation this time. Okay, just the names. 1 is this, 2 is this, 3 is this, like that. Ashtanga Yoga. Okay, Alok ji, go ahead. Yam, Niyam, Ahar, Pratyahar. No. Yam Niyam के बाद. Yam Niyam, Ahar. No. Pratyahar. No. That is the 5th. 3rd and 4th क्या है? Yoga. No. योगा के ही 8 steps हैं. योग के ही 8 steps हम बात कर रहे हैं. Yam is the first part. Niyam is the second part. आसन. ज्योति जी आपने बोल दिया है. कोई और बोलेंगे? Number 3. Yes, Riddhi, welcome. Yes, Asan. Asan is the 3rd step. Okay, posture. Then we have 4th step. 4th कौन बोलेंगे? Ahar, Pratyahar. No, that is the 5th. आप प्रत्याहार में पहुंच गए हैं. प्राणायाम. प्राणायाम. आसन के बाद प्राणायाम. Hold on. आसन के बाद प्राणायाम है. 3rd is आसन. 4th is प्राणायाम. 5th is, now Alok ji, you can say that. आप नहीं बोल रहे. 5th is प्रत्याहार. हाँ. 6th is dharana. Yeah. 7th is dhyan. Yeah. 7th is dhyan and 8th is samadhi. Everybody clear on this? Yes. Let's acknowledge everybody who shared. Okay. So first Jyoti ji and then Ritu ji and then Alok ji. Okay. Good. So everybody remembers now the 8 steps. Yes. Now let us move on to the first step of Yam. Yam, we saw that. Please go on mute. I don't want any disturbance. So in Yam, we saw the first 5 steps. So what is Yam? Yam is the rules by which you live a peaceful coexistence with the outside world. That means और लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी को बिताने के लिए आपको जिस रूल्स को फॉलो करना है वो है आपका Yam. Okay, and we saw the 5 steps. Now what are the 5 steps? Only the names first, no explanation. पहले steps बताएंगे, बाद में हम explanation पूछेंगे. Okay, so what are the 5 steps? कौन बोलना चाहेंगे? Raise your hand or just say your name and then say, okay, Krishna, go ahead.
I know 3 steps: ahimsa, satya, and brahmacharya. Okay, good. First 3 steps are absolutely clear. Ahimsa, Satya, and Brahmacharya. And we saw this in detail. So those who missed out, they will have to watch the recording of the last week. So Ahimsa, one word is Ahimsa, one word is what? Ek word mein. What is Ahimsa? Non-violence. Non-violence, very good. Non-violence. Yeah, everybody should be saying that. We already discussed it. Yes. So Ahimsa is non-violence. Satya is what? Truth. Truth. Very good. And we also saw that Ahimsa and Satya हम अलग-अलग नहीं देखेंगे. तो non-violence and truth हम अलग-अलग नहीं देखेंगे. In fact, सत्य, अहिंसा और धर्म को एक ही साथ हम देखेंगे. And that will be the composite, conclusive or comprehensive view of reality of a life situation. Right? तो कभी-कभी धर्म का पालन करना है तो आप अहिंसा फॉलो करेंगे और सत्य को थोड़ा सा आप या तो नहीं बोलेंगे या फिर चुप रहेंगे या फिर झूठ बोलेंगे. दैट इज फाइन. क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करना जरूरी है. समटाइम्स धर्म की रक्षा करने के लिए आप सत्य बोलेंगे और हिंसा करनी पड़ेगी. तो सत्य और धर्म के मार्ग पे आप हिंसा करेंगे, यानी कि धर्म युद्ध करेंगे, जो कि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, धर्म युद्ध के लिए युद्ध करो. राइट? सो दैट इज अ धर्म युद्ध फॉर यू. तो उसमें हिंसा होगी फिर, बट ओवरऑल वी विल से अहिंसा, सत्य एंड धर्म, इन तीनों को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में देखेंगे. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन. यस. यस. थर्ड इज ब्रह्मचर्य, विच इज मॉडरेशन. हमने देखा लाइफस्टाइल हैं आपके डिफरेंट. तो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स में, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में ब्रह्मचर्य किस तरीके से आप फॉलो करेंगे. क्लियर? I don't think there are any doubts and questions on this. We have already discussed that. Fourth step is what? कौन बताएंगे? Fourth step is, yes, Ritu ji. Asteya. What does it mean? Non-stealing. Non-stealing. Very good. Asteya. That is non-stealing. That means you are not going to even think or speak or do any action which will amount to possessing something which you do not rightfully belong to you. जो आपका नहीं है उसको पाने की कोशिश नहीं करोगे, ना सोच में, ना बोल में, ना कर्म में. क्लियर है ये? नॉन स्टीलिंग. You will not steal. Then fifth is what? Fifth step that we saw. Fifth step. Yes, Ritu ji. संचय नहीं करना. अपरिग्रह. Okay. Yeah. तो आलोक जी आप क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे? हाँ, वो संचय नहीं करना, ज्यादा संचय, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना. हाँ. Non accumulation. One word. Non accumulation, non possessiveness. That is aparigraha. Right? So whatever you have in excess besides your needs, you can share that with people, or you can donate that to people, so that the non-accumulation part is very much established in your life. Then you are contributing to others, and you are serving others, and you are in the process of giving. Instead of taking, you will start giving. Whatever is in excess, give. Simple. Clear hai ye? 5 steps. Any doubts on this? Any questions? We had detailed discussion on this, right? Okay. Now I will, before we move on to the real agenda of today, which is Niyam and the 5 parts, let me tell you what Sage Patanjali has said about what yoga is. So yoga, we know, is union with the divine, oneness with the divine, correct? And ultimate step is samadhi. We know that Ashtanga Yoga ka 8th step samadhi hai. But the definition of yoga, what Sage Patanjali has given, is yoga chitta vritti nirodha. I'll repeat that. What is yoga? So yoga is chitta vritti nirodha. That means complete cessation. Yoga actually means complete stoppage or cessation of what? All the vibrations in the chit. Okay. So I'll say that again. Yogas chitta vritti nirodha. यानी कि चित्त में जितनी भी वृत्तियां हैं वो stop हो जाए. So vrittis are the vibrations which cause the thoughts to rise, the tendencies or the sanskars, or you can say the gunas. Okay, so these will vibrate the chit and will raise that vibration as a thought. Then the thought enters the mind.
यानी कि thought arises in the mind. Clear है ये? तो complete cessation of the vrittis in the chit. Chit is the mind stuff, or you can say the memory bank, right? तो subconscious mind में जब सारे vibrations शांत हो जाएंगे, that is the ultimate destination of, or that is the ultimate promise of yoga. That is what Sage Patanjali says. और जब चित्त पूरी तरह से साफ हो जाता है, वाइब्रेशंस नहीं रहेंगी, मीन्स व्हाट, चित्त में सारे जो गुनास हैं वो शांत हो गए हैं, दे आर बर्न्ट ऑफ. दैट मीन्स कोई तमोगुण नहीं है, कोई रजोगुण के बीज नहीं है, ऑल द जितने भी बीज हैं सारे जल गए हैं. So all the seeds are burnt off. So there is no tamogun, there is no rajogun, there is no satogun, and you are actually becoming, you are moving towards nirgun in the form of niruddha chit. So niruddha chit, or complete clearance of all the vibrations in the chit, that is the promise of yoga. That is the ultimate purpose of yoga, and that leads to samadhi. So that is what Sage Patanjali is trying to explain in these 8 steps. तो ये 8 स्टेप हमको करके क्या मिलेगा, हमारा चित्त जो है वो निरुद्ध चित्त बन जाएगा. That is the promise, right? And योग के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. 8 स्टेप्स तो ये अलग हैं. 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं which I would like to explain before we move on to the next step. What are these? So everybody pay full attention. I will ask these again, so you will have to remember it. Okay, these are very very fundamental. तो सबसे पहले है first fundamental principle of yoga is what? Keep your back as straight as possible, as much as possible. Back straight. तो सब लोग अपनी बैक चेक करो and keep your back straight right away. Slouching pose में नहीं बैठना है, बैठ रहे हैं तो कमर सीधी करो, right? So this is important. First step क्या है? Keep your back straight as possible, as much straight as possible, as much as possible, as long as possible. But एक लाइन में अगर बोलेंगे minimum words में, keep your back straight. Clear everything? So number 1, keep your back straight. First rule. Second rule. What is second rule? Anybody? मैं पहले बोल चुका हूँ एक बार, कोई बोलना चाहेंगे? हम जिन्हें शायद अटेंड किया हो, टोनी को याद होगा. No overdoing. No overdoing. Okay. Whatever you do in your life, no overdoing. खासकर अगर हम योग में कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं करनी. You are here to train your mind, you are here to train your body, not strain your body. तो आसन भी कर रहे हो तो उतना ही करना है जितना आप कर सकते हो. नो ओवरडूइंग. ऑफिस में भी वर्कोहॉलिक नहीं बनना है, ये लाइफ में भी लेके जाओ. वर्कोहॉलिक नहीं बनना, 24 घंटे काम नहीं करते रहना है. नो ओवरडूइंग. सो रहे हो, बहुत ज्यादा ओवरडूइंग नहीं करना, यानी कि 24 घंटे सो गए. नो ओवरडूइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर साधना. तो नो ओवरडूइंग. जितना आप कर सकते हो अपनी क्षमता अनुसार उतना करेंगे. क्लियर है? फर्स्ट स्टेप, कीप योर बैक स्ट्रेट. सेकंड स्टेप, नो ओवरडूइंग. एंड थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप स्माइलिंग. If you have a reason to cry, cry. Yes. And once you have cried enough, start smiling. रोना है, कोई वजह है रोने की तो रो लो, उसके बाद मुंह धो के आओ. रोना खत्म हो गया, वजह खत्म हो गई, अब स्माइल. तो इस सेशन में किसी को रोने की कोई जरूरत है नहीं, तो स्टार्ट स्माइलिंग. So you should have a smiling face. Clear है? So 3 rules Yes. for moving forward on the path of yoga is what? I will repeat that. Number 1, keep your back straight as much as possible. Number 2, no overdoing in whatever you're doing. And third, keep smiling. Clear? Okay, now let us see how many of you are paying attention. Who is going to repeat that 3 steps? 3 rules. Well, should I repeat? Yes, go ahead. The 3 fundamental rules is keep your back as straight as possible, as much as possible, as long as possible. No overdoing. We don't have to strain ourselves. We have to train ourselves. No excess doing. Whatever is needed. No workaholic. No, not sleeping much. And the third is keep smiling. Even if the cry is needed, cry, but then wash your hand, wash your face, and then smile. Always. Wow, absolutely. Recording करके सुना दिया वापस. Very good. बहुत बढ़िया. Let's have a big round of applause. Okay.
सर आपकी जो फोटो है थोड़ी सी कम आ रही है, तो हाँ पोजीशन ठीक करिए उसकी। हाँ अगर वर्टिकल रखा है तो उसे हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, आप ज्यादा अच्छे जूम में नजर आएंगे। Can you see me Okay. now? Yes, Better yes, way? we can, but then it is slightly cut. हाँ तो इसको फोन को अगर ऐसा रखा है आपने तो फोन को ऐसे कर दीजिए। Okay. हाँ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, ज्यादा अच्छी फोटो आ जाएगी। ओके एनीवे, सो दैट इज गुड, लेट्स एक्नॉलेज वंस अगेन, वेरी गुड जॉब। यस गुंजन जी, you have raised your hand, you want to share something? Yes, sir. Yeah. I think everything should be in a moderate form, whatever it is, whether it is 3D, 5D, 6D, whatever D is. It should be in moderate form. Like everything should be balanced. What I feel. That's कि fine. ना ही ज्यादा तमस में जाना है, ना ही ज्यादा रजस में जाना है, ना ही ज्यादा सात्विक में जाना है। तमस में तो जाना ही नहीं है गुंजन जी, लेट मी करेक्ट हाँ यू। जी, तमस में तो जाना ही नहीं है। चलो हाँ रजस को मॉडरेट करना है और एस्टैब्लिश सत्वा में होना है। इफ यू आर मूविंग जी, फॉरवर्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, दैट इज व्हाट यू विल बी एमिंग एट। ओके सो यस दैट इज सर, गुड, यस सर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज स्लाइटली डिफरेंट, मे बी यू जस्ट जॉइंड इन। हमने अभी या 3 रूल्स योग के बताए हैं, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। एक्चुअली आई एम आउट समवेयर, तो मेरे को जितना रेंज आ रहा है तो मैं उतना ही ले कोई बात नहीं, so be in that, that's perfectly fine. So when we Okay. talk of the 3 steps of 3 rules, I will not say 3 steps, steps तो 8 हैं अष्टांग योग के, तो वो steps हैं, लेकिन 3 rules हैं जो हम हर step पे follow करते हुए जाएंगे, right? तो ठीक है। कौन दोबारा से repeat करेंगे वो 3 steps? Okay Gunjan ji, you can be okay, that's fine. Anybody else who would like to repeat the 3 steps? कौन बोलना चाहेंगे? Keep 3 your steps back straight, no overdoing, and keep smiling. and keep smile. अरे smile के साथ बोलना है वो। When you say keep smiling, the smile should come on your face, right? Otherwise there is no point. Yes, yes. Okay? Like it's always saying that, you know, like मेरे गुरु मंत्र है जो मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ कि be joyful, be grateful. तो मैं एक बार अभी हिली से बात कर रहा था कि टेल मी व्हाट इज योर गुरु मंत्र, तो बी जॉयफुल बी ग्रेटफुल। मैंने कहा दोनों का तुमने मिट्टी में मिला दिया। हाँ इफ यू आर जॉयफुल द जॉय शुड शो ऑन योर फेस, एंड इफ यू आर ग्रेटफुल यू शुड बी ग्रेटफुल इन द टोन में दिखना चाहिए, राइट? सो व्हेन यू when you say keep smiling, have a smile on your face. Okay, everybody clear on the 3 rules? So these are the rules. Every step, all the 8 steps, you will need these. Keep your back straight as much as possible, no overdoing, and keep smiling. And this will be there for all the areas of your life. अपने हर लाइफ के हर एरिया में इसे ले आओ, right? Let's acknowledge everybody. Okay, very good. Who all shared? So Gunjan ji, Krishna, good job. Right. Now we are going to move to the agenda for today. 5 steps of Niyam. What is Niyam? We have already seen the overview. Niyam is self-discipline. Self-discipline. So what are the steps that you are going to follow as a, you can say, practice for yourself, so that you are living a perfect lifestyle? So 5 steps are highlighted here. First step is Shauch, cleanliness. One word will be cleanliness, both internal and external. We will come to that in detail. But Shauch means what? Cleanliness. Clear? स्वच्छता अभियान सुना है आपने? हाँ, वो बाहर की दुनिया के लिए है, ऐसे ही हमको अपने अंदर की दुनिया के लिए भी एक स्वच्छता अभियान चलाना है. That is Shauch. So we will see what all we can do here. Second step, Santosh. Santosh is what? Contentment. One word. Contentment. Right? We will go into the discussion later on. But right now, whatever is the one word definition, I'm giving you that. So, Shauch, cleanliness. Santosh, contentment. Third is Tapa. Tapa is, you can say, strict discipline, you can say austerity. जैसे तपस्या करते थे पहले हमारे ऋषि मुनि, तो कैसे होते थे? Absolutely full determination के साथ, perseverance के साथ, कोई भी बाधा आ जाए वो हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, perseverance, right? So that kind of an attitude to work, tapa. So you can say very strict austerities, penance, तपस्या एक तरीके से. तो जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उसमें तपस्या जैसी लगन है तो उसको हम तपाह बोलेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी काम कर रहे हो पूरी लगन से, पूरे परसिवरेंस के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आपको करते जाना है. क्लियर है ये? तपा. फोर्थ स्टेप इज
Fourth step is anybody? आज का पोस्ट किसी ने नहीं देखा है, मैं ही बोले जा रहा हूँ. फोर्थ स्टेप क्या है? देख के नहीं बोलना. अच्छा चलिए देख के बोलिए. फोर्थ स्टेप क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप. स्वाध्याय. स्वाध्याय मीन्स व्हाट? सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस. हम पर अध्याय करते रहते हैं. तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये. वी आर ऑलवेज इनटू करेक्टिंग द आउटसाइड वर्ल्ड. बाहर के लोगों के लिए हमारे पास सारे रूल्स बने हुए हैं. तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए. सो इट इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस. Accept the other person as he is and as he is not. But when it comes to you, don't accept your tamasic sanskars. Fight it out, root it out. Okay, so swadhyay, self-analysis. You are going to do all the analysis on yourself, not on anybody else. तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी का ये बहुत बड़ा रूल है. स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको औरों को सही नहीं करना है, आपने अपने आप को सही करना है. Last week we were having a discussion with कौन थे? अनिरुद्ध जी थे. हाँ, अनिरुद्ध जी थे. So we were talking of औरों को कैसे सुधारना है, right? So again, that will happen when we transform ourselves, when we show our light to others, and then they will get enrolled into it. That is how we need to impact others. We cannot tell others, सुधर जाओ. कोई नहीं सुधरेगा. तुम सुधर जाओ, मतलब मैं सुधर जाऊँ. Then I can lead by example and motivate others and lead others. Correct? Yes. So Sadhyaya is very important. You are doing self-analysis and not analysis of other people in your life. Very important. Fifth, and this is the toughest, by the way, and this is a fundamental. आप कोई भी योग का मार्ग पकड़ें, चाहे ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, भक्ति योग, कोई भी योग का मार्ग पकड़ें, ये पांचवा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. ईश्वर प्राणी धाना. ईश्वर प्राणी धाना, सरेंडर टू द डिवाइन. कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन. कर्म योग में भी आपको ये मिलेगा, कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन. भक्ति योग में तो है ही सरेंडर टू द डिवाइन, राइट? एंड कर्म योग में भी आप जो भी कर्म कर रहे हो, आप एक वर्शिप की तरह गॉड को ऑफर कर रहे हो. सो ईश्वर प्राणिधाना, सरेंडर टू डिवाइन इज फंडामेंटल फॉर योर यूनियन विद द डिवाइन. अगर आपको वननेस विद डिविनिटी चाहिए तो सरेंडर टू डिवाइन इज ए मस्ट. ओके, सो वी विल लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. First 5 steps. Everybody clear on this? Let's repeat these 5 steps. 5 steps कौन से हैं? एक वर्ड में मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए, और फिर उसके बाद आपको रिपीट करना है, राइट? फर्स्ट स्टेप इज, या ओके गुड. कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं आई महेंद्र गोयल. मैं हाँ जी, बोलिए. First step you said was cleanliness, both inside and outside, like ODF. You mentioned कि जो हमारा स्वास्थ्य है, open defecation free and internal also. Second is santosh, contentment. First, third is tapa, that is strict discipline, full determination, perseverance, and penance, austerity, determination. These are the 5-6 words that can be added to this. And the fourth is swadhyaya, self-analysis. We are always in a mood to accusing somebody, aspersion somebody. We don't have to correct others. We have to correct ourselves for no reason or the rhyme. जैसे हम कह देते हैं करेला कड़वा क्यों है, कोयल काली क्यों है, शेर काटता क्यों है, कुत्ते भौंकते क्यों है, unnecessary. So instead of that, if we analyze ourselves, SWOT analysis of self and self only. And the fifth is, which is most fundamental, as you said, Ishwar Pranidhana, complete surrender to divine oneness. Wow. Which I am not to do it. Which I am not able to do it. अभी ये तो बहुत सर, ये 10 पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, ये तो शायद ही गिने चुने 1% भी नहीं कर पाएंगे, हाँ, ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्नॉलेज यू. वंडरफुल रिकैप ऑफ द पॉइंट्स. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. वर्ड टू वर्ड आपने सुना दिया वापस. ये तो शायद मेरे को रिकॉर्डिंग में भी इतना अच्छी तरह नहीं सुनाई देता. सो ग्रेट जॉब एंड फुल अटेंशन. वेरी गुड. सो एवरीबॉडी क्लियर ऑन द 5 steps? Everybody clear on the 5 steps? Great. Now we are going to discuss this. Yes, go ahead. बोलिए. कोई बोलना चाह रहे हैं? Yeah, I want to know the last step का नाम नहीं मुझे समझ आया. ईश्वर प्राणिधाना.
Huh? Ishwar is God. Pranidhana means surrender. So surrender to the divine. Ishwar Pranidhana. Okay. Okay. Don't go by the word. Word is a knowledge. See the wisdom. Surrender to divine भी याद कर लेंगे तो भी काफी है. But मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको नाम याद करवा के रहूंगा. So don't worry. Okay. Yeah. So the 5 steps. Everybody clear? 5 steps. Okay. Yes, sir. Can I speak something? हाँ. Go ahead. Sir, surrender is very easy. It's just in our mind कि हम surrender बहुत मुश्किल है. It's very, very easy. मैंने ये नहीं कहा मुश्किल है, मैंने कहा फंडामेंटल है for all you guys. हाँ जी. जो एक सर ने कहा है मुझे नहीं पता. तो कोई बात नहीं. So it's very easy. Hmm. Just go with the flow and you are surrendered always. Okay. So Gunjan ji, ready for a discussion? Yes, sir. I Okay, am good. always. So for a change, we will start from point number 5 first, since Gunjan ji is active. Okay. And Yes, I'm having this discussion because possibly I cannot have this discussion with anybody else. Okay. So that's why Gunjan ji, you are there. Now, when you surrender to the divine, what will be the sign? कहना बड़ा आसान है, जैसे आपने कहा, करना भी बड़ा आसान है, आपने कहा, right? तो surrender to divine अगर आप करोगे, क्या फर्क आएगा आपकी लाइफ में? सर, for an example, मेरी जॉब गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने कहा कि 10 दिन का रेस्ट मिला है, तो मैंने कहा ओके फाइन, आई सरेंडर्ड इट. ओके. तो क्या हुआ 10 दिन उससे का फिर? रेस्ट मिला है तो मेरे को भी रेस्ट चाहिए था, क्योंकि मेरे को अपने घर का और बहुत काम करवाना था, तो वो बेटर है कि वो करवा लेती हूँ. अभी जॉब चली गई है तो इट्स ओके, 10 दिन के लिए रेस्ट सही. Good. Now tell me, how does it impact your spiritual journey? Oh, it has impacted marvelously. I cannot even imagine कि मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ अब. पहले मैं इतना सोचती थी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी. I had always sleepless nights, but now I sleep like a pig. Sleep like a baby बोलो या sleep like a log Like a of wood बोलो. baby. हाँ. Yeah, like a baby. I sleep like a baby. I always tell my divine कि you are there to take care of my son who is sleeping far away from me. You take care of him. I am not responsible. I am really sorry. Okay, let's acknowledge Gunjan ji. Wonderful, wonderful. This is what I wanted to hear. This is what I wanted to hear. एक मिनट में जी आ रहा हूँ. Let me first clarify the point which she is making. Now, Gunjan ji ने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं उसको एक word में summarize करना चाह रहा हूँ एक line में. When you surrender to the divine, you invoke the divine in you, and you become more divine. That is the catch. You need to understand Yes, what is sir. happening when you surrender to the divine. Okay. Yes, तो आप sir. जो बोल रहे हो कि divine will take care, you have to understand when you surrender to the divine will automatically take care, because the divine is Yes, already sir. taking care of you. You are not. हमको Yeah. लगता है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए divine दिखाई नहीं देते. जब आप जी बोल दोगे सर. मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आपको दिख जाएगा कि सब कुछ divine ही कर रहा है. जी Correct? सर, हमारे गुरबानी में भी है एक ओंकार कर्ता पुरख, बिल्कुल. तो कर्ता Exactly. पुरख वही है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं. मैं तो सोचती हूँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. So when you surrender to the divine, then you actually realize that the divine is working through you. Yes sir. Yes sir. So you invoke the divine through you, and then you become more divine. Understand, this is the spiritual journey which is going to impact. Yes sir. Clear? Yes sir. Wonderful, Yes, wonderful, sir. Gunjan ji. Yes. Great insight, and that is Thank you. what I Thank you wanted so to. much, sir. Thank you so much. Yes. Thank you. So everybody clear on what happens? And this is the fundamental I said. Point number 5 is very, very important. अक्सर लोग बोलते हैं यस सरेंडर टू डिवाइन. कैसे करें पता नहीं, क्या करें पता नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है. तो तुमने सरेंडर टू डिवाइन किया ही नहीं है. अगर सरेंडर टू डिवाइन करोगे, द डिवाइन विल वर्क थ्रू यू, क्रिएटिंग मैजिक एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ. हेल्थ रिकवरी, abundance of wealth, absolutely joyful relationships. These are the things you will create in your life when you surrender to the divine. So see, if you are experiencing these things in life, complete freedom from all bondages, complete freedom from all sufferings and miseries. This is what will happen if you surrender to divine. Sir, one Yes. more thing. Hold on. Let me make the point first. Okay, sir. First, understand the importance of these statements. Yes, sir. Surrender to divine is not just 3 words. It will propel your spiritual journey to in such a booster mode that you will be rocketing up into the consciousness. Yes, sir. So it is fundamental, right? Let everybody get it. Okay, Yes, I'll sir. come to you, Gunjan ji. Hold on. Okay.
Yeah, sure. Yes. So what is opening up with this first statement that I made on Ishwar Pranidhana? What is opening up? Just share, somebody just share. Anyway, yes, Amiji, you wanted to share something. Go ahead. So about 1 minute back, you said the three-step process. You surrender when you surrender to the divine gets invoked in you, and then you also become more divine than probably whatever you were before. I think it was so beautiful, and it got almost animated in front of me, like let's say a shapeless figure in front of you, which is divine, made of light, and you're surrendering, and that light has got into you, invoking the divine in you, and then you're becoming stronger than before. It was so Absolutely, absolutely. That is the visual I actually wanted all of you to get it. आप विजुलाइज करो कि जब आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को, आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हो और देखो कि वो लाइट अंदर आ गई है और वो लाइट फिर मैजिक क्रिएट करेगी, करना ही है उसमें. एंड देन यू विल सी योर डिजीजेस वैनिशिंग. महेंद्र जी, you will see your diseases vanishing. You will see all the sufferings and miseries vanishing. But that divine light is light years away from me. No, it is there with you right now. Thank you very much. Thank you very much. As Thanks long for- as you are in this Zoom session, it is there with you. Whenever I am thinking of you, it is there with you. Okay. I'm grateful. Truly grateful. I am so grateful to Shashi sir that he has invoked, मतलब एक एक पॉइंट पे उन्होंने मुझे बोला है सरेंडर गुंजन. उन्होंने मुझे सिखा के एक बारी जब और कोई को आया था तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी एंड मेरे बेटे का कमरा थोड़ा दूर है. मैंने देखा एंड मैंने कहा बाबा जी ध्यान रखना मेरे बेटे का. बाय बाय, आई एम गोइंग टू स्लीप. So Okay, let's acknowledge Gunjan ji and Amit ji for wonderful insights. but I'm really thankful to you that you have आपने मेरे अंदर भर के ये डाल दिया है कि सरेंडर और अब मुझे उसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है. Good. So those who are wondering कि surrender कैसे होगा, you should join the healers program. Okay. Yes, definitely. I'm not only wondering, I'm wishing anxiously No, to you engage in- should learn Okay. far more better than Okay, Gunjan ji, like. control. बाकी लोगों को भी बोलना है, हाँ? Okay. All right. Thank you, Mahinder ji. Thank you, Gunjan ji, and thank you, Amit Thank ji. you so much, sir. Thank All you. right, and thank you, Tanuja ji, for appreciation. Yes. Now let me talk to somebody else who would like to share. कौन बोलना चाहेंगे? अभी जो मैंने बोला उससे क्या निकल के आया आपकी लाइफ में? कुछ ज्ञान चक्षु खुले. Yes, Krishna, go ahead. जैसा अमित जी ने बोला वो पॉइंट पे डिविनिटी इन्वोक वाला, तो इट आल्सो स्ट्रक विथ मी एंड मेरे साथ वो 4 महीने पहले का फ्लैशबैक आ गया कि व्हेन आई वाज टोटली डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम डिवाइन एंड कैसे धीरे करते वो अब जाके आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड आई एम नाउ प्रोपेलिंग इन माय लाइफ एंड एवरी एस्पेक्ट एंड आई वाज अब ऐसा हो चुका है कि मैं जो स्किप करता था सेशंस, मेरी अभी क्लाइंट कॉल खत्म हुई जस्ट 8:30 to 9. आई वाज वर्किंग सिंस मॉर्निंग एंड इज वेटिंग कि मेरे को ये मीटिंग अटेंड करनी है एंड नाउ आई विश कि ये और फ्रीक्वेंट हो जाए. So this is what has happened with me. Very good. Yeah. Wonderful, Krishna ji. Good. And anyway, it is happening twice a week for you anyway, no? Saturday भी तो मिल रहे हैं हम लोग. हाँ, good. Okay, very good. Yes, anybody else who would like to share? Ritu ji, anything you would like to share? आपका experience of invoking the divine? Yeah. When we surrender to the divine, it's like taking a big load off our head. The responsibility of whatever is happening in good or bad, whatever is happening is not on me now. I just have to do my karma with 100% purushart, but the result finally the divine will take care. So it's not that I am taking the burden of whatever is happening. So it makes me lighter. Absolutely perfect. Wonderful insight, Ritu ji. And of course, Ritu ji has gone through the healing sessions and she is a completely transformed person, by the way. Yeah. So good job, Ritu ji. Okay, anybody else? Let me see anybody else who has just joined in. Omkar ji, Anita Buddhiraj ji, and G Chaudhary ji. कोई भी शेयर करना चाहेंगे? And Oppo CPH 2505. I have no clue. Anyway, कोई भी शेयर करना चाहेंगे अगर आप में से कोई, तो आप शेयर कर सकते हैं. वीडियो ऑन करना जरूरी नहीं है. You can share like that also. तो कोई भी सवाल हो या कोई कुछ इंसाइट्स हो जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया. ओके,
बिकॉज ये मेरे ख्याल से ग्रुप कॉन्शियसनेस की नीड थी कि सीधा 5th पॉइंट डिस्कस हो गया, जो कि नहीं होता नॉर्मली. ओके, सो लेट मी नाउ फॉलो द नॉर्मल शेड्यूल एंड गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप. So first step of niyam is short, cleanliness. Now we all know cleanliness के बारे में हम क्या बोलें, सबको मालूम है. सुबह उठते हम जो फ्रेशन अप होते हैं, that is the outward body short. बॉडी को हम साफ रखते हैं. yes, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, going to the washroom, doing whatever. पसीने ज्यादा आ गए तो एक और बार बात ले लेते हैं. so this is outward cleanliness. अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना, right? Well combed होके बाहर निकलना. so all this is we take care. This is the physical appearance. This is important. This is what? Outward cleanliness. Okay. Outward cleanliness also depends on your home. एक तो आप आत्मा है, तो आपका पहला घर तो आपका शरीर ही है, तो पहले शरीर को साफ रखना है. और फिर इस शरीर का एक घर है जहाँ पे आप रहते हैं, जिसका एक एड्रेस भी है ना. तो जिस घर में आप रहते हैं उसको भी साफ रखना है. तो वहां पे भी क्लटर नहीं होना चाहिए, कहीं भी क्लटर नहीं होना चाहिए. तो जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो, हटा दो. और जो चीज दान देनी है दान दो. जो ज्यादा है उसको, हमने देखा ना परिग्रह में, हमने देखा था नॉन एक्यूमुलेशन. जो चीज ज्यादा है, आपको लग रहा है मेरी जरूरत से ज्यादा है, उसको दान कर दो. जो चीज बेकार की चीज है उसको निकाल दो. कुछ भी करो, कीप द क्लटर आउट ऑफ योर होम. सेम विथ योर वर्क प्लेस. अगर ऑफिस में है तो कीप द क्लटर आउट. एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. बाहर की दुनिया ऑर्गेनाइज होगी, अंदर की दुनिया ऑर्गेनाइज होने में वो मदद करेगी. क्लियर है ये? तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस का मतलब ये हो गया, शरीर, home, workplace. Then of course you can go ahead, your society, your city, your country and your world and the planet earth and everything. So वो सब outward cleanliness है. Now that is clear. So we look at the inside cleanliness. Inside world में क्या क्या clean करना है? आप घर के मकड़ी के जाले साफ करते हैं. हाँ, दिवाली से पहले तो करते हैं, वैसे भी करते हैं हर महीने एक बार, है. तो आपके दिमाग के भी कोने कोने में मकड़ी के जाले आ जाते हैं, कॉपवेब. देखा होगा आपने, व्हाट्सएप में बहुत सारे पोस्ट आए होंगे, दिमाग के अंदर घुस के सफाई हो रही है. तो ये इंटरनल क्लीनलीनेस. माइंड को भी साफ करना जरूरी है. आपके कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो आपने 1 साल से या 2 साल से चेंज नहीं किया? पकड़ो उस बिलीफ सिस्टम को और उसको तब तक चेंज करते रहो जब तक वो यूनिवर्सल लॉ ना बन जाए. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट. इनसाइड क्लीनलीनेस का मतलब क्या है? सपोज वी टेक ऑफ क्लीनिंग योर बिलीव्स. एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ है आपका, एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है. ऐसा एक थॉट आ गया आपके दिमाग में कहीं. ठीक है जी. तो कौन गेम खेल रहा है सोचो. आपका विक्टिम ईगो एक्टिव हो गया कि मैं बेचारी या मैं बेचारा, जिंदगी के बोझ का मारा, दुखियारा, ये सब कहानियां आपकी बनने लग गई हैं. अब ये थॉट अगर आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चल रहा है तो इस थॉट को हटाना जरूरी है. क्लियर है ये थॉट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस? इफ यू आर फीलिंग लाइक ए विक्टिम, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. दिस इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ इज दैट द डिवाइन dwells in you. I will go one step ahead. You are divine. This is the universal truth. The divine is operating through you and you are powerful enough to create magic and miracles in your life. Yes or no? This is the truth. तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो और तब तक नहीं रुकना जब तक आप यूनिवर्सल ट्रूथ तक ना पहुंच जाए. आई कैनॉट ट्रस्ट एनीबडी. मैं सिर्फ बिलीफ सिस्टम बता रहा हूँ लोगों के क्या होते हैं. मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, कोई विश्वास करने लायक नहीं है, सब धोखा देते हैं मुझे और सब मुझे दुख देके जाते हैं, सब मुझे छोड़ के जाते हैं. दिस इज अ बिग वन. मैं जिससे प्यार करूं वो मुझे छोड़ के चला जाता है. अब आप रिलेशनशिप में ही नहीं जाना चाह रहे. होता है ये. यंगर जनरेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ. दिस इज सम कुक्ड अप, कुछ और बोलने वाला था, सम रबिश दैट यू आर थिंकिंग. ओके, सो डोंट mess up your life with these wrong thoughts. बस सोच समझ के बोलना पड़ा है. बस actually flowing with some other adjectives, no? So so you have to understand this is not the universal truth. Universal truth क्या है? You are divine and you are here on the planet Earth to share love, peace and joy with your fellow beings. Don't expect love and joy from others. You are here to share love and joy with others.
Making sense? Yes? Yeah. So, clear, sir? Everybody clear? What is internal cleanliness? You have to change the belief system, thoughts, mindset. जो नेगेटिव है उसको हटाओ और तब तक नहीं रुकना जब तक वो यूनिवर्सल लॉ ना बन जाए. Yes? And okay, Krishna ji, go ahead. सर मैं क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा क्लैरिटी ये चाहिए कि unless someone like how would someone change its belief system, मतलब unless he or she is not healing या unless he or she is not connected to divine, so how he is going to change the belief system? You can go to a coach. Find a coach in your life. आप हो life coach. हाँ. So get hold of a coach and he will tell you your belief system is rubbish. Some rubbish thought has come into your virus hai. This is not your original program. Your original program is what? You are a loveful soul, you are a peaceful soul, you are a powerful soul, you are a pure soul, you are a divine soul, you are a happy soul, you are a blissful soul. That is the program that you are supposed to run on the planet Earth. तुम कौन सी प्रोग्राम में घुस गए? तुम्हारे प्रोग्राम में वायरस घुस गया. तुम कह रहे हो I am a loser, I am a failure, I am rejected, nobody loves me. ये सब वायरस हैं. ये बिलीफ सिस्टम तुमको दिए गए हैं, ये तुम्हारे नहीं है और तुमने पकड़ लिए हैं. छोड़ो इसको. ये कोई कोच ही बताएगा ना. Either get them to the session or ask them to talk to me. Easier done. Right? Okay, let's acknowledge Krishna. So you got the answer, right? First, you have to understand what is your belief system, what is running your life, and what is running your life you see by looking into your life. मेरी हेल्थ कैसी चल रही है, मेरी रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं. अगर उसमें सफरिंग और मिजरी है, दैट मीन्स कोई वायरस है. ये ओरिजिनल प्रोग्राम नहीं चल रहा है. Understand the language I'm using. Virus means some belief system of some rotten belief system has gotten. But sir, again यहाँ पे फिर एक बहुत बेसिक चीज है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस. तो Yes, we will come to that. We'll come to that in the next step. Yeah, hold on to that. We are coming to that. Okay, so cleanliness clear हो गया, right? Second step is संतोष. संतोष is what? Contentment. Contentment, one word. Now this is a huge topic actually. Contentment, संतोष समझना आसान नहीं है. Okay, क्योंकि आमतौर पे सब लोग बोलते हैं जरूर कि संतोष के लेवल क्या है. So let me ask you a question. I will take it up as a question and I will throw some punchlines. Try to understand and digest the punchlines and then ask questions. Okay. So first tell me, how will you measure your level of contentment? Contentment का मतलब सबको clear है? संतोष? Yes. So how would you measure the level of your contentment? Tell me that. कैसे measure करोगे contentment को? स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ? पर अध्याय नहीं कर रहे. Very clear. वो अगला step है वैसे, but I'm reinforcing the idea. अपनी एनालिसिस करनी है, आपका कंटेंटमेंट लेवल क्या है, कैसे करोगे? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितना मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ और मैं अपने और एंड एट दैट पॉइंट आल्सो आई एम स्टिल थिंकिंग टू ग्रो अहेड. वेरी गुड, मतलब वेरी गुड, राइटली सेड, एक्सेप्ट दैट. मैं समझ गया आगे क्या बोलने वाले हो. वेरी गुड कृष्णा, गुड अंडरस्टैंडिंग. एनीबडी एल्स? हाउ डू यू मेजर, बट हाउ डू यू मेजर? In the given circumstances, whatever they are, it should be contentment. And content directly proportional to the level you grow, the contentment should grow also. Very good. बहुत बढ़िया महेंद्र जी, good answer. Okay, anybody else? Any other answers? What is contentment? I'll give you the final answer, don't worry. Yes, Ritu ji, go ahead. Yeah, contentment I feel is when I'm happy and there is no feverishness in me to do anything. I'm not like really struggling to do something. Okay. I'm happy with the way things are going with me. Okay, and yet I'm thinking of moving ahead also. Very good. तो दो पॉइंट बहुत अच्छे बोले आपने, और स्ट्रगल नहीं होना चाहिए. सो यू हैव हाइलाइटेड वन मोर एडिशनल थिंग व्हिच इज गुड. ओके, लेट्स एक्नॉलेज रितु जी. एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी डिफरेंट आइडिया ऑफ कंटेंटमेंट? क्या है? हाउ डू यू मेजर योर कंटेंटमेंट? Yeah, I think hold on, one at a time. Yes, G Chaudhary ji, I'll come to you and then Alok ji. Yes sir, what I feel is तेरा भाना मीठा लागे. हाँ, come again. तेरा भाना मीठा लागे. Okay. No matter in what condition you are, what position you are. If you understand contentment well, you would always say, even if you are not getting something that you desire,
you will say Tera Bhana Meetha Lage. Okay. So acceptance, basically, right? Accept. Acceptance as a divine will. Got it. Perfect. Very good. Let's acknowledge Ji. Ji Chaudhary. आप पहली बार आ रहे हैं sir. So welcome to the session. I'm Amit ji has invited me to. Okay, very good, very good. Welcome. And thank you for sharing your views. And anything else you want to share, please feel free. I'm just listening because I just joined. Thank you, thank you. Yes, Alok ji, you wanted to share something? Yes, go ahead. Let's acknowledge ji. No feeling of greed and no feeling of jealousy from others, what they have. Okay, okay. So that is contentment for you. But why are others coming in? No, I am satisfied. Contentment is I am satisfied with I have, but I should not have jealousy from others. Others तो छोड़ ही दो ना. Others तो बीच में आने ही नहीं चाहिए. Contentment की बात कर रहे हैं हम. Contentment has nothing to do with others. It is only you and you. अब बताओ. I am satisfied with whatever I have. Contentment. Good. That is contentment. And, no feeling of greed. I don't have feeling of greed. हाँ, greed ठीक है. Greed always come from comparison, by the way. तो ठीक है. पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई, मेरे को भी चाहिए, तो greed आया फिर. उसको प्रमोशन मिल गई, मुझे भी चाहिए, तो ग्रीड आएगा. कंपैरिजन करोगे तो ग्रीड आएगा. कंपैरिजन नहीं करोगे तो ग्रीड नहीं आएगा. अगर कोई है ही नहीं आसपास आपके, एक मिनट आ रहा हूँ जी. अगर कोई है ही नहीं आपके आसपास, तो कंपैरिजन नहीं होगा, तो ग्रीड भी नहीं होगा, राइट? बट कंटेंटमेंट तभी लेवल होगा आपका. तो कंटेंटमेंट लेवल क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ. वेरी गुड. लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम अनिरुद्ध जी. आप अभी आए हैं. यस, गो अहेड. थोड़ा आज लेट हो गया. नो प्रॉब्लम, बोलिए. मेरे कंटेंटमेंट का मुझे लगता है कि टू सेटिस्फाई विद द मिनिमम नीड्स. Okay, very good, very good. That's a good definition. To be satisfied with the minimum needs. Let's acknowledge. Okay, so now I've taken the views from many people, so I'll give you the level of contentment. How do you measure the level of contentment? Living in the moment is contentment. Living in the moment is blissful. That is not contentment. Yes. Okay, sir. That is joy, bliss, love, peace. वो सब आ जाएगा. वो तो divinity वाली बात हो गई. मैं contentment की बात करूँ. So you have to understand there are two things. Whenever you do some action, or whenever you are thinking of doing any action, there are two things. One is your effort and one is your result. Correct? एक आपका effort है और आपका एक result है. तो contentment का rule क्या है? Always be contented with the result, but never contented with your actions or your efforts. अपने एफर्ट्स को आप लगातार इंप्रूव करते जाओगे, तभी आप प्रोग्रेस करोगे, तभी ग्रो करोगे. बट यू शुड ऑलवेज बी कंटेंटेड विद द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन. नाउ लेट मी आल्सो एक्सप्लेन दिस बिफोर मूविंग अहेड. सपोज आपने एक एग्जाम दिया और आपके 60% रिजल्ट आए. फर्स्ट एक्सेप्ट दैट रिजल्ट. दैट मीन्स कंटेंटमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ द रिजल्ट. ओके, बट having accepted the result, don't accept or don't be contented with the efforts that you have put. अब knowledge बढ़ाओ, tuitions लो, जो भी करो, घंटे की और घंटे पढ़ो, and then you move from 60 to 90. Whatever is required to do that, you will plan an action plan for that and take action. So you are never contented with the efforts or the actions, but you're always contented with the result. That is the level of, that will give you contentment in life, ongoingly. Making sense? Okay, so whatever you have said is in line with it. It includes everything in there. So I beg to differ. In that case, you are only half contented. You are contented with the result, but you are hankering after the efforts. It means there is some coefficient of the contentment which is still missing. It means you are not fully contented. Yeah, you are okay with the result first. Only then you will look for improvement. Improvement तो करनी होगी ना सर. जो भी आज की present situation है, उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना सारे. तो अगर 60% मार्क्स आए हैं, आगे तो बढ़ना है ना. मेरे को 90% लाने हैं अगले बारी में. नहीं लाना कि 60 पे ही चले. 90 पे चाहते हैं ना हम लोग. जो भी हमारी सिचुएशन है लाइफ की. अब देखिए, हम एग्जाम छोड़ देते हैं. मेरी आज की हेल्थ स्टेटस क्या है? मेरी आज की हेल्थ स्टेटस ये है, डैश डैश डैश. ठीक है, बीपी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ये बैक पेन हो सकता है, नी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अब मैं क्या कर रहा हूँ? योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुबह उठ के वॉकिंग, जॉगिंग, ये वो जो भी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ताकि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो, डिसीजेस से फ्रीडम मिले. अगले लेवल पे जा रहा हूँ ना मैं, तो एफर्ट्स तो मेरे को करने ही पड़ेंगे. बट फर्स्ट आई एक्सेप्ट दैट ओके दिस इज इट. ये है, पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
So you have to understand contentment actually is a balance between your expectation and acceptance. Understand this, it will be easier for you to move on, right? So thank you, Mahinderji, for giving your opinion, right? But let us understand this in a different way. And meanwhile, it is about 10 o'clock. I'll need a 10 minutes extension. Everybody okay with that? And in case you have something urgent, you are free to leave the group. Okay. आप जा सकते हैं अगर आपका कोई schedule हो. But I will take another 10 minutes. So to bring this discussion to a conclusion. So contentment, as I said, is a balance between expectation and acceptance. Now understand this. अगर आपकी expectation बहुत high है और आपका acceptance level बहुत low है, you will be in a miserable condition. Yes and no? Contentment level is very low. इसको रिवर्स कर दो. आपका acceptance level बहुत high है और आपके expectations बहुत कम है, तो क्या होगा? तो आपका contentment level high होगा. Yes or no? Yes. So it is always a balance between expectation and acceptance. Yeah. Understand this. And expectation will always kill the joy in your life. This is a universal law. Whenever you have an expectation, you cannot be joyful. And whenever you are accepting, you are joyful and you are peaceful. So look into your life and see. जब भी आपने result को accept किया है, contentment level high रहा होगा and you would be joyful. और जहां आपने acceptance level low रखा है, expectation बहुत high थी, तो क्या हुआ होगा? You would be miserable and you would be contentment level is very low. Yes or no? So you have to understand the basic rule. Basic rule क्या है? Expectation will always kill the joy. So keep minimum level of expectation from others. But I'm not saying कि expectation नहीं होगी, होगी. इंसान है हम लोग, हर relationship में कुछ ना कुछ expect करते ही हैं हम लोग. At least be aware of it first so that you can bring it down slowly, gradually, so that your contentment level is high and you are joyful. That is how you will increase your contentment level. So look into your life, do swadhyay, and then see how it is for you. Okay. I will also give you another one thing. एक और चीज है जो मैंने पहले भी शायद बोला हुआ है, अमित जी के साथ डिस्कस भी किया हुआ है कई बार. दो वर्ड हैं जिसको हम बोलते हैं होप और होप्स. दो वर्ड हैं. हाँ, एक होप है और एक होप्स है. होप्स में एस लग गया होप के साथ. क्या फर्क है? See the usage in a line and then you see what is the difference. डिफरेंस कौन बताएगा? अगर डिफरेंस बता दिया आपने तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर आर यू मेसिंग अप, कहां पे आप गड़बड़ी कर रहे हैं. होप एंड होप्स. व्हाट इज होप? होप क्या है? जो हम एक्सपेक्ट कर, नहीं एक्सपेक्ट तो नहीं डिफरेंट है. Hope is acceptance and the hoax is expectation. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था. तो अक्सर हम बोलते हैं ना उम्मीद, कीप होप, उम्मीद रखो भगवान भला करेंगे. तो उम्मीद आप हमेशा होप आप किससे करते हो? somebody very powerful or somebody from the divine. डिवाइन होप, डिवाइन से उम्मीद रखोगे ना आप, लोगों से नहीं. लोगों से उम्मीद रखोगे तो पछताओगे, एक्सपेक्टेशन बन जाएगी. कीप होप विद द डिवाइन, डिवाइन से उम्मीदें रखो. सरेंडर टू द डिवाइन, which we saw in the fifth step. टली देख लिया हो. हाँ, when you surrender to the divine will take care of you. योगक्षेम वहाम्यम भगवत गीता में बोला गया है. करेक्ट. When you surrender to the divine will take care of you. That is a universal law. That is a divine promise. Okay. तो उम्मीद जो है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं, वो उम्मीद है. Okay. होप, होप्स क्या है? होप्स क्या है? एक्सपेक्टेशंस, हाई होप्स, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. हाँ, चार्ल्स डिकेंस का था ना. तो हाई होप्स. तो होप्स विल ऑलवेज लीड टू misery. Hope with the divine, umeed, that is the acceptance level. And accept everything as divine will. जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और मेरे अच्छे के लिए हो रहा है. अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है. That's it. That is the right understanding. Acceptance level, divine will. Clear है ये? So that takes care of संतोष, right?
अभी थोड़ा सा फटाफट मैं क्लोज करता हूँ, देन रिकैप में हम अगली बारी फिर कवर करेंगे इसे, ठीक है। थर्ड स्टेप इज तपह। अब तपस्या वाला पोजीशन देख लीजिए, कोई महर्षि तपस्या कर रहे हैं पोज में, हाँ, बिना हिले डुले, बिना किसी रुकावट के अपने ध्यान में लगे हुए हैं। तो आपको कोई भी कर्म करना है तो वैसे ही करना है, उसी परसिवरेंस के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं टस से मस नहीं हूँगा, अपने कर्म में जुटा रहूंगा। दिस इज तपह। zeal for life बोल सकते हो, zeal for actions बोल सकते हो, passion, perseverance, all these things will be tapa. Clear है ये? स्वाध्याय सेल्फ स्टडी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डू योर ओन एनालिसिस, डू नॉट एनालाइज अदर्स, एंड ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू डिवाइन, वी हैव ऑलरेडी सी। क्लियर? So this is a gyan for today's session. We will do recap in the next session, but right now let me just check what you are going away with the session. Session से क्या लेके जा रहे हैं? So one word, one line each from all the participants. फटाफट कौन शेयर करना चाहेंगे? आज का लर्निंग क्या है? For me, it's Ishwar Pranidhana, complete surrender to divine and Surrender to divine. Okay, very good, very good, great. I कृष्णा have का हो under- गया. Yes, महेंद्र जी. I have understood that if I really surrender, the quotation as I use in my lectures, that if we surrender to God and we are carrying a weight, it doesn't mean God will make the weight less, but it will make our shoulders more strong to carry that weight. Absolutely. Absolutely right. This is also a great way to understand, because you are invoking the divine in you, the divine will take care. Now the divine will help you to take the more burden on your shoulders. Body तो आप ही की रहेगी ना sir? हाँ? Correct. Correct. You will get the divine powers. That is how you can say that. Very good. So you can say a small weakling will become a Hulk, and then he can take the whole burden on him. Very good. Good understanding. Great. All right. Anybody else? कौन बोलना चाहेंगे? और रितु जी क्या लेके जा रहे हैं? I'll take this takeaway ki expectations from others have to be minimum. This is the key to be happy. If we keep our expectations minimum with others, with people who are related to us or staying with us, we'll be happier and joyful in our own life. So for ourselves, it's better to do this. Very good, very good. बहुत बढ़िया. Very good. Okay. तो महेंद्र जी, रितु जी हो गया, कृष्णा जी ने बोल दिया. एनीबडी एल्स? तनुजा जी आपने मैसेज पढ़ लिया हमने. So expectation and acceptance का balance you said is the key. Okay. Anybody else who would like to share? Yes, Anirudh ji, go ahead. मैं दो पॉइंट्स इसमें अपने थोड़ा सा बताना चाह रहा था. वो पता है इसमें आज की टॉपिक में डिस्कस हुआ नहीं हुआ. एक डिवाइन के बारे में है कि हमें अपने अंदर डिवाइन को, वी आर डिवाइन, उसको हमने देखना है, अपने डिवाइन को पहचानना है. और जो दूसरा पर्सन सामने है उसमें भी डिवाइन है, उसको भी पहचानना. ये आपके लास्ट पॉइंट में आएगा, सरेंडर टू डिवाइन में आएगा. ये जब सरेंडर टू डिवाइन करेंगे, एक्सपेक्टेशन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. नहीं प्रॉब्लम, ये अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है. ठीक है जी. संतोष सेकंड पॉइंट है. एक मिनट, संतोष सेकंड पॉइंट है, मिक्स मत करिए. जो आप बोल रहे हैं वो 5वें पॉइंट में आएगा, ईश्वर प्रणिधान में, जो हम बात कर चुके हैं. ठीक है ना. When you surrender to the divine, you invoke the divine in you, and you see the divine in you, and you see the divine in others. आप ये पॉइंट बोल रहे हैं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट है. बट ये 5वां पॉइंट है. वेरी गुड सर. एक पॉइंट और था कि जो डू आवर बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें काफी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है. तो वो आप कंटिन्यूअसली ग्रो करोगे अपने एफर्ट्स में. Yes, जो हमने संतोष में बात करी वही बात है. हाँ जी, संतोष. नेवर बी कंटेंटेड विद योर एफर्ट्स इंप्रूव करते रहेंगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स फास्ट. वेरी गुड, दिस एक्नॉलेज अनुरुद्ध जी. वेरी गुड, गुड जॉब. ओके, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? जो नए लोग आए हैं, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? ओमकार जी, तनुजा जी, तनुजा ने बोल दिया. जी चौधरी जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? व्हाट आर यू टेकिंग अवे फ्रॉम द सेशन? Or anything you would like to share? Self-analysis. Self-analysis, very good, Swadhyay, very good. What I was yesterday, I should strive to be better than yesterday. Perfect, perfect. Yes. So slow, gradual, small improvements, जिसको हम corporate language में Kaizen बोलते हैं. So look at that, Swadhyay and improvement. Small steps that will create magic in your life. Very good, wonderful, good. Anybody else who would like to share? Omkar ji,
Oppo CPH 2505. Anything you would like to share Yes. before we close? Yes, sir. Yes, Gunjan. Surrender तो करना ही पड़ेगा है. होना तो वही है जो होना है, तो इससे बेटर है कि एक्सेप्ट ही कर लो उसको. ठीक है, बेटर नहीं है. That is the way to move ahead in the journey. Yeah, that is the way. To surrender करना is the best way. To accept everything, whatever comes in our life, however it is coming, we have to surrender no matter what. Yeah, it is a choice. Don't Yeah. have to मत बोल. Have to में तो लगता है कि मजबूरी है. I choose to और surrender. That is the right language. मजबूरी से करना पड़ेगा स्पिरिचुअल लोगों को, सर. No, मजबूरी नहीं है, choice है. Don't use the word मजबूरी. Okay, sir. Choice. Spiritual Okay, journey sir. is always a choice. Yes. Okay, sir. Yeah. Yes. Very good, Gunjan ji. Good job. Okay, sir. Thank you. Okay. So nobody else. Then I will come to Amit ji as a closing. आज Sanjeev नहीं है, so I'll come to Amit ji. Amit ji, your takeaway and anything you would like to share? The takeaway of that animated visual of me, which is being a light, and there's another similar form of light, which is divine, and I'm invoking that in me, and I'm becoming stronger. That was the key point, that I'm becoming stronger. I mean, we've been talking about this, that we all are gods and divine, but receiving and becoming stronger in the same direction is a brand new thing that is opening up now. Yeah. Wonderful. Great, Amit ji. Okay, Wonderful. so with this, we acknowledge all the participants who are here and who have shared. Thank you very much for your participation. It was a wonderful experience for me. Enjoy a great day, enjoy a great week, and we meet again next week. Till then, Aham Brahmasmi. Great. Take Namaskar. care. Good night. Bye-bye. Wonderful, and thanks for the contribution. Thank Thanks you. for the transformation in the thought process. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Good night.